15 minutes time. One good power nap and coming. Sit down. Okay. Chalo, we are with tropical deciduous. All the eatables, rainfall time, be careful. Eating some sundry things, you fall sick. Tuja. Okay, look here. Now we are moving to the second one, which is different from the first one. Okay. Here we have two classifications. Okay. It is based on the rainfall. If I say rainfall, this is 70 to 100. Here 100 to 200. Okay. Humidity is 51 to 58%. Here 70 to 80%. Now, how different is deciduous from evergreen? Here the trees shed their leaves, correct? They are accessible. They are the most, in fact, I can write widespread forest. What are widespread? In India, maximum area are covered under this forest. Okay, widespread, easy to enter. And the trees are of high economic value. Okay, have you heard about this teak and sal? Jisse furniture banta hai, bamboo and all this stuff are here. So the two forests where you get a full-fledged question is this. One is deciduous and other is evergreen. Notebook mein as it is likho. It is easy for you to memorize for your exams. India and Pakistan going to have a clash second time. When? Make a government sources pretty hard. Fill se everyone. Fill se nahi. It is full and fine for Pakistan. Wait for 3 days. Khatam nahi. I want that below. Come on, guys. Complete it. That last classroom, we can see the trains coming in. It's highly disturbing. It is aesthetic. Aesthetic feature. पूरे 2 पेयर में एक ही सीखा aesthetics. अच्छा लगा। उसका एक्चुअल मीनिंग भी आता है आपको बोला ठीक है 28 क्यों रखा 32 रखो यस 32 टेम्परेचर देखो we will be studying both dry and moist separate but we'll be writing first what is deciduous first and this I'll give you detailed rules unlike the evergreen. सुलभ चर्चा लेके बीच में लेके खड़े रहे aesthetics right now evergreen खुद ही aesthetics ले deciduous है ये अच्छा उधर से हाँ चाहिए right now लेता है कॉफी और चाय
mainly found in the regions, mainly found in the regions with moderate or low annual rainfall. With moderate or low annual rainfall. Second point, most widespread forest in India. Most widespread. देखो मैं bullet point दे रहा हूँ, मैं पूरा point. Most widespread forest. तो भी चलेगा. Next. यार 15 minutes break में ऐसा energy दिखता है, वैसे ही मुझे देखकर तो ऐसा. Am I showed this one? No. She's saying yes. Yes. This. You are क्या करें बोलो? Shall I start teaching something thermodynamics? इसका अच्छा सा पढ़ा. कोई thermodynamics? चल जाएगा. Maths. Maths पढ़ाओ. Maths पढ़ाओ. So what the maths is? Range Look at me. नहीं वो maths पढ़ाओ. Right now. It is subdivided into two main types. So अभी types हम लोग नहीं लिखेंगे, already लिखा है ना? हाँ, इसमें सब शेयर करें. Based on rainfall and humidity. Two main types based on rainfall and humidity. तो आप लोग ने अगर जो भी नंबर डाला ना उधर डाल दो. No need to write. A and B डालो. Subtext के लिए A and B डालो. लिखना कुछ नहीं. Come to now textbook. तो वो भी अभी आपका काम कम कर दिया. How do you remember what is moist and what is dry deciduous? Dry deciduous में ज़्यादा. देखो 100 to 200 centimeter it is moist deciduous. है ना? Less than 100 अगर आपको 70 भी याद नहीं, less than 100 is dry deciduous. Now my question is that how humidity is dividing them? Or humidity होता क्या है आपके लिए? Humidity मतलब air में कितना. I know that, but how it is determining my forest? 51 to 50% हो जाता है. अरे सर क्या पूछ रहा है? तू वो बता रहा है. बोर्ड पे. देखो. और trees में. सर बोलते ह्यूमिडिटी क्या होता है? वो क्या इफेक्ट करता है? बिल्कुल. वो तो भूल गए हम. Cold रखता है climate. नहीं तो you visit any beach हाँ. and you come inside the same time. The beach wind is generally moist, lot of humid, and you see some people who have that irritation with that one. What is that? Sodium salt. They have this trouble, but in their interior they're quite fine. Because rainfall is not going to be 24/7. Correct? Even the environment is very important. Look, I come in the third lecture. The environment that you showed was something I felt very unhappy. I know third lecture, I know the topic, but then yes, sir, hello sir, that is a gesture. Instead of that, you make me believe why did I come in? I'm not saying that. No, you told us to keep quiet as he is, so we were quiet, and that's why you felt like. Sorry. You were not at all happy for the topic also. So we believe only. Why you compare every time? He is also very ordinary. Like We compare it. We always believe this dry deciduous and moist. Yes, some coma to bring you out of that. So ये जो moisture है ना, that plays a very important role. As you were saying leaves, as you were saying plants, they have a bearing towards the moisture content, which is called as humidity. Okay, so I'll give dry deciduous to you and moist deciduous to you. Which is the first one to read? Dry है क्या moist है? चलो start with that, my dear. कहाँ पर dry है? पीछे हो. Yeah, you keep the volume. I don't need. So that at least you can mark. Dry deciduous forest. नहीं हाँ. Climatic condition. These forests are found in areas having a mean annual temperature. जान डाल दे तो. These forests are found in areas having a mean annual temperature of 23 to 20. You remember the sums? What is this mean annual?
साल भर का टेम्परेचर. हाँ, go ahead. Annual rainfall between 70 centimeter to 100 centimeter. Okay. And humidity between 51 to 58. Very good. Distribution. Hmm. They are found in Bihar and Uttar Pradesh. Okay. Now, why does Bihar and Uttar Pradesh mainly? Aditya is from Bihar. Do you know? He's not from Maharashtra. Then how can he say that? It's not good. No, I just asked. Very simple. Oh, Wow. Characteristic features. These forests are between moist and deciduous. Forest. क्या moist है? Deciduous. अरे my dear friend, it is deciduous. Okay. And tropical zone. Such a big respect to me. Okay. On the better margins, these forests have a transition into moist. अंडरलाइन कोई बेटर मार्जिन जहां एरिया जो ना इस तरह का ना उस तरह का उसका चांसेस है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मॉइस्ट में है ना कौन कन्वर्ट होगा ड्राई इनटू मॉइस्ट बट वो कौन सर आप एक बार बोल के आओ ना हाँ सर. इज इनसाइड हियर Just tell them what to shop. Yes. My spreads are also. हाँ सर you can tell this. मुझे भी मालूम है ताकि दो झपड़ में मार सर रिया को जाने दो सर सब दर्द है हाँ रिया सर. क्यों रिया तुम्हारी बॉडी में लगती है चलो रिया मतलब यू while on the drier margins they degrade into thorn forest हां in the northern Indian plains and in देखो एक चांस दिया कि ड्राई से मॉइस्ट बन सकता है सिमिलरली उन्होंने क्या बोला ड्राई से थॉर्न में बन सकता है व्हाट इज थॉर्न जो हम लोग मिक्स करेंगे राजस्थान सर यश तो भड़क जाता है भाई फेंक देता है यश भाई तो हम कब बैठ करके का कुछ भी. कंटिन्यूअस फाइनल लेक्चर में भी ऐसे ही होता है so whenever we say this dry maybe further it goes into that thorn what does that thorn means we have cactus we have desert conditions and we have normally spines छोड़ो that's it देखो शांति हो गई तो प्रधान करा दे so we always believe one thing that forests are in the transition period. You know what is the word transition means? Because of deforestation, we might see that deserts are becoming rampant in India, and that will be deadly signal to a country like India. Because India being an agrarian economy, है ना? Yeah, agrarian से याद आया. Yesterday only the International Monetary Fund announced that India has moved from 5th position to the 4th position. इतना वॉर हुआ रैंकिंग में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जापान था इंडिया इज डिस्पोज जापान अभी 3rd पोजीशन में जर्मनी है तो बोलते हैं कि और 2 साल या 1 साल के अंदर अगर इंडिया का ग्रोथ रेट एंड जीडीपी राइजेस लाइक दिस इंडिया माइट कम इनटू जर्मनीज प्लेस because that is what that first is US China and US that is what they have very smartly put a war within 3.5 days. And China-like country or Turkey-like country want India to wage a war. Correct? India is also spending the money that. That doesn't mean कि मैं पाकिस्तान को रेट कर रहा हूँ तो मैं सेफ है. मेरा भी तो पैसा खर्चा हो रहा है. तो देखो, there are various things what India is going through, and India is very smartly handling everything. Now there is one 5th fighter generation plane which China might give to Pakistan this year and only. तो इंडिया ने वेरी स्मार्टली उसके पहले रशिया से SU-57 करके एक फ्लाइट है जो अमेरिका के पास भी नहीं है इंडिया ने वो अभी अजित डोवाल इज इन रशिया ना फॉर नेक्स्ट 5 days तो इज गोइंग टू क्रैक द एग्रीमेंट आज एग्रीमेंट किया तो कल प्लेन नहीं आ जाएगा बट इज गोइंग टू फास्ट ट्रैक दैट एग्रीमेंट देखो we say only one thing war fight is in different place but then I am a geography teacher then I have to speak about the forest I have to speak of the jungle. But at the same time, I cannot ask the terrorist, come on, yaar, jungle mein, humko kuch maarte jao. But wherever we want to hit, India will hit. And you feel maybe like 10 या 15 दिन रुको. India is marshalizing the resources slowly and steadily. The day when they feel
कि पाकिस्तान को अभी पीओके हिट करने का फिर से रात को 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा and then Pakistan will do all kinds of nuisance things क्योंकि बोलते हैं ना हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए अब I don't know how do you feel like in my house I give them many surprise elements अभी नहीं दिया हूँ दूंगा बहुत जल्दी सरप्राइज हाँ that मतलब आप लोग के साथ मेरा पूरा ड्यूटीज हो जाएगा ऐसा नहीं कि आपको कोई सरप्राइज देगा but I have to lead my life what is that very simple that deciduous forests are important for everyone in their life economical value. हाँ The trees of this forest provide timber, fruits, and other useful okay, products. timber fruits मत करो Timber- timber and fruits ये कौन सा नया फ्रूट है timber fruits हाँ चलो Large tracts of these forests have been cleared for agricultural activities. ओके वेरी सिंपल देखो इंडिया अगर मैं बोलूं अगर मेरे अंदर एग्रीकल्चर खत्म हो गया ना देन इंडिया इज नो मोर अभी आई फील एवरीवन लाइक द टीचर्स बट इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स टू टीचर स्टूडेंट टू स्टूडेंट Yes. बट देन आई हैव सीन नॉट एवरीवन सर्टेन टीचर्स हैव दिस ईगो पूरी मुझे छोड़ दिया बच्चा बच्चा दैट इज व्हाई सम स्टूडेंट्स कम एंड टॉक टू मी हां आई सेड डोंट कम क्लासरूम में उसके लिए भी मेरे पीरियड की जरूरत है Yes, sir. आज थोड़ी टीचर्स को होता है वो. होने दो ना I just say to my children आप लोग बैठो मैं अंदर आके बात करता हूँ and you might have seen also I am a little bit separate I don't do much so one thing we have seen you have to maintain your identity अभी what is this बच्चा's identity fully capable but थोड़ा सा lazy है बच्चा ये तो fully capable उतना नहीं है but lazy भी नहीं है बोलते जितना मुझे मिला ना सब कुछ है सर क्यों जरा आप सर अभी उसका थोड़ा सा बात करें Riya is very happy Riya is very happy with what she gets but then family pressure है especially पापा है थोड़ा सा या मम्मी है मम्मी बस उसके वजह से वो कर रही है वरना तो उसको छोड़ दिया ना पूरा फिर मार्केट उसके हाथ में है और हमारा कॉर्नर में इसका नाम हो गया आदित्य is a silent killer he doesn't like that work he wants to do he is doing it and he might do but वो बेचारा अपने दोनों में रहता है look here but everyone has their own identity फिर मेरे बारे में बोलूं या आप लोग बोलो यार मैं क्यों Yes. What do I say? Yes. how do I you only keep commenting on my बोल भाई बोल अरे, what do I? how do I know you tell me अरे I am ready to accept What to accept? तो try to do क्या बोले? हाँ बोलो You are very dashing, and you sometimes you are happy, sometimes you are very angry. And angry for अभी what हाँ मत बोल उसको बोले. no, you come and looking at your face, we get to know that you are angry, so we keep quiet. हाँ. Yeah. Yes. We know that he is not in the mood, and so we don't talk. This is real. ठीक And है when you look happy, we can say anything to you, and you never mind अच्छा about that. Yeah. then इतना पता है. हाँ, वही. teaching यार teaching Teaching तो Teaching is very nice. Nothing about it. I try to control this thing angry वाला देखो अभी मैं भी human being है ना Yes. there are so many factors runs in and behind this एक हाँ हाँ सर. आप हो सके हाँ, sir. हाँ चल रहा है कैसे हुआ यार कल तक तो मन था बिजी तो चलो वन कोड कर रहा था हाँ वो लूप है उधर कट करके कुछ करना हुआ हम लोग ने एक टेम्पररी करके रखा है एक डाल देना वो क्योंकि वो मेरा स्लाइडिंग बंद होता है ना तो उसके लिए मेरे से चार्ज मत कर दो हाँ क्या मैं तो पुराना कस्टमर है यार मैं एलीट कस्टमर है एयरटेल का मैं चाहे तो मैं एयरटेल बिलिंग अभी मेरा वो ब्लैक कस्टमर में मुझे रखते हैं क्या मेटेरियल का क्या लगता है क्या कनेक्टर है वो तो बता कितना लगता है इसमें
Me too, me too. बट क्या होता है वो तो स्लाइडिंग आता है तो फिर वैसे भी तू कनेक्टर डालेगा तो कैसे डालेगा किधर ऊपर या नीचे बोल रहा I tried once. करेक्ट करेक्ट वो कैसा डालेगा कनेक्टर वो तो बता जरा अभी जो आपने किया है उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा ना चलेगा ना तो ये 001 क्यों आता कोड बी वाला एक मिनट वो पिछड़ा में कितने साल से है जब ये वायर का ये नहीं हुआ तभी भी थोड़ा हवा चलता है ना तुरंत बंद हो जाता है तो मेरा वो सेटअप बॉक्स चेक कर ले है ना ये कनेक्टर अभी मैं घर में रहता तो मैं लगा करता हूँ मुझे कोई इशू नहीं है हाँ ठीक my chichi is in my house my mother has flew to this Madurai I'll also need to be there आज हमारा मेन चक्कर है chichi is my sister What? Chichi. I'm South Indian I know that. Oh, we knew that, but we didn't know this chichi. chichi not chichi chichi is तो good आपके गाँव का नाम क्या है? Madurai चला भी please State I thought state कौन सा है? पोंगल में तमिलनाडु केरला. तमिलनाडु तमिलनाडु. Oh, you'll see the best of the best bullfight you'll never forget ऐसे राहुल डोसा गांधी रहता हाँ डोसा भी साथ से. वो तो मैं ही बना के दे दूंगा इधर से आज भी लाया था बोलते तो मैं देता था आप रोज ही जाते होंगे ना कभी डोसा इडली सांभर नहीं आई डोंट नीड बस साउथ खाने लगे रोज कुछ भी मत है कुछ भी आई born and brought up in entirely Maharashtra so अरे I सर पूरन पोली. अरे चुप अरे बिजू सर ने एक बार इडली वाला लाया ही वाज लाइक सर साउथ इंडियन है सर ने इडली लाया डोसा और इडली I like dosa. चलिए, चलिए मेदू वड़ा अच्छा है. हाँ मेदू वड़ा भी अच्छा है और भी बचा कुछ देश में बोलते हैं टू ट्राई ब्रेड उत्तप्पा हाँ उत्तप्पा भी Did you अच्छा है finish? Yes. To read. Come on, who is deciduous? Deciduous forest climatic conditions. Such forests are found in areas with moderate or low annual rainfall of 100 centimeters. Underline that. Moderate or low. Why they are using the word moderate as well? Because you never know कि low rainfall के मतलब वो thorn forest में चले जाएगा. Carry on. And the mean annual temperature of 24 degrees Celsius and 27 degrees Celsius, and humidity percentage of 50%. Distribution. These forests occur in the northeastern part of the peninsula. Textbook नीचे writing पे नहीं है. उधर all three are looking. इसी का वो हवा ही नहीं लगा. So that is what I have read you. Carry on. Along the foothills of the Himalayas and eastern slope of the Western Ghats, they occupy a sizable area. Remember at least minimum two regions are where they are located. That's enough. They are very common. what concept. yeah it is already marked as one part You are not. I am. Sorry, yeah. Carry on. They occupy a sizable area in Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu, and have an area bigger than a evergreen forest. Characteristic features. The trees in these forests shed their leaves from 6 to 8 weeks. ये underline करो 6 to 8 weeks. ये जो evergreen में नहीं था. Okay. Go ahead. And early summer. When the shortage of water is acute, further the subsoil water is not enough for the trees to keep their leaves all the year round. Second, the particular species can be found over a large area. Kailash area. large area Third, Large Kailash area. they are commercially most exploited. ये खत्म करो मैं Kailash area अच्छा secrets of Kailash. Yes, right. अच्छा मैंने है देखा है क्या देखा है? वो I see this movie. सीवुड्स में है ना. कोई चाव क्यों नहीं पता ये वहाँ होगा। का वो मॉल में है ना भाई. हाँ, वो वो सामने वाला कैलाश पर्वत नहीं। हाँ, ओके सही. मुझे मालूम था ये खाने के लिए हाँ वहाँ पे वो भी सही है उसकी वो भी डिशेस My Maggi over my burger. right message चलो बोलो
the common trees of such forests are sal, shisham, mahava, mulberry, palas. Put all this into bracket, especially teak and sal. Now look here, one thing I tell you very clear. Either moist or dry deciduous comes in the board exam. Na? The temperature and humidity are the the three types are same, conditions are same, and more or less it is correct, right? Okay, next lecture I probably feel it will be in the evening, and you please bring your maps, okay? Because that will be India. maps of India. Togo map. No India. I'm flying in this month. Oh. अरे but मैंने अभी तक tickets नहीं लगा तो भी मेरी सर जाओगे कहाँ पर सिंगापुर? कोई आपके because I need to मैं तो एजेंट को बोलता हूँ I'm towards the airport जब तक tickets डाल मुझे बाद में that is the way I take अब देखते हैं कुछ काम है उसका सबसे फेवरेट एयरलाइन सिंगापुर है Oh. Singapore. बहुत फ्रेंड है पड़ी जाती है सर आप अकेले जा रहे हो? हाँ अभी तो मेरी मम्मी पहले ही गई ना तो आई तो फ्लाई घूमने जा रहे हो या ऐसे? नहीं यार उधर भी एक मिनट में मुझे काम बहुत रहता है I have to come back within 4-5 days that is okay यूनिवर्सिटी। वो तो मैंने अभी सर वो यूनिवर्सिटी का CSE में नहीं बट अभी मैंने उधर से ब्रेक लिया है कहाँ पर हो? कन्वेंट में मेरी छत्रपति शिवाजी कैसे Tropical deciduous forests are commercially the एक most. काम करते हैं ना पुट द क्वेश्चन इन द नोटबुक डिस्टिंग्विश बिटवीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में श्योरली आता है ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस distinguish between dry deciduous and moist deciduous अभी करें? अभी you want me to give दोनों we will do. good ऐसा करना चाहिए good she is studying me ना ना चलो ठीक The next forest we will be doing is tropical thorn forest. tropical desert Ah. I open it in the evening or night time. Seriously. Complete. We are finishing this chapter, this lecture only. then what will we do You will go home after the lecture. What else you will do? Will you cook some food for me next? no even gas No. make gas We can cook it on the. इधर है ना अपने पास. oven ओवन नहीं है वो कुछ अलग ही है वो। वो है माइक वो टाइप है. चिमनी नहीं है. चिमनी नहीं है वो। इंडक्शन है. चिमनी। I got the best one from Germany, but मेरा मॉम ने उसको यूज ही नहीं किया. गाँव में भी. जल्दी नहीं करता। नहीं अच्छा है. सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 points of distinguish and 1 point of example. 4 marks नहीं आता है 8 point is only for half marks, not for 1 marks. Today I was to be in Beed area. My friend was going some Beed. Ahmedabad. Not Ahmedabad, Aurangabad. Maharashtra. It is Andaman and Nicobar Island. Because yesterday, 12 he departed. मुझे बोला चल चलो जल्द चलो बोला नहीं कुछ आया. सर आप चाहते तो अभी हमारे कितना अच्छा लगा. लेक्चर हमारा चला था। आपका भी नेक्स्ट टाइम ठीक. मुझे परमानेंटली भेजना ना फ्रेंड क्यों मैं टेम्पररी भेज सकते हैं. नहीं सर ऐसे बहुत अच्छा होगा ना. मैथ्स करने हैं अभी। हाँ सर Hey, complete this, then I'll explain all the forest one by one. सर वो सब ठीक है वो पहला हाँ बताओ बताओ. सब ठीक है। ये भाई साहब को आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक बराबर याद रहता है. जैसे बना के रखते हैं
So, Then Relax. only example. Relax. then Example वाला में बिहार और Yes. Example में three types आएगा. वो state Example में है वो state डाला. वो distribution है हाँ, common sense का पता है. ये आ सकता है. ऐसे. कैला हाँ, अपना लोग ऐसे ही. अभी टाइम चल फास्ट जा रहा है एक ही मतलब घंटा इसके बाद घर बनना है ना, ऑफिस जाएगा. एक ही घंटा बचा एक ही ये बारिश आ रही है सोऊंगा क्या मजा है यार take a football, tell your mother and brother. Yeah, that's it. Keep their mommy say I love you, better. I met her in this ninth standard. I can't forget. भूल गया था. आप अभी नहीं सर यहाँ पर नहीं मिले थे यहाँ पे हाँ, वो बाहर भी वो आप 10th वालों के साथ थे तब हुआ She was very sober mood just because of me. And I told her don't worry about second. मैं करूँगा ही सर Give my regards to her. यस Yes. यस क्वांटम में इतना अच्छा है. कभी मिलेगा 78 आया. तो बात करो. अभी अगस्त में है ना क्वांटम में 78 उसके आया. पहले भी कैसे कैसे है? इतने कैसे एक तो स्कूल की टीचर मेरे को फेवर करती है. मतलब फेवरेट पर्सन तेरी तो और तू बोलता है और तू बोलता है सर आदित्य को पास स्कूल की अलग बात है, यूपी की अलग बात है. कुछ नहीं भाई मेरे प्रोजेक्ट वर्क सबसे देखिए एक मिनट फिर बोर्ड का तो और एक बात है फिर क्या करेगा बोर्ड में वो देख नहीं. देख नहीं लेगा मैं तो तुझे फिर ऐसा ढूंढूंगा ना you have the every talent to get the highest because of your uncontrollable laziness which your papa was also इसको हंस accepting के इसके कर सकते this time you are not coming for a PKM meet I will send two bodybuilders to pick you up तो टेंथ में आने नहीं है बीटेक. आएगा अभी कल जो डाउन सॉल्विंग था यू कैसा अटेंड करेंगे नो नो हमें पता ही नहीं चला. हमारा टाइम ही नहीं है सर फिर से बोल टाइम नहीं अभी जाके सोऊंगा वो बोल सकता है वो तो सोना वो टाइम नहीं होता. वो हमारे पेरेंट्स Life टाइम का- है सर टाइम किसके साथ किसके साथ पेरेंट्स को टाइम नहीं है वो बोलूंगी टाइम किसके ये शी ओनली सर स्टूडेंट आ सकते हैं सिर्फ ओपन हाउस पे आ सकता है बट विद द पैरेंट अरे बस चल. यश भी लाइक अभी आता हूँ मैं हाँ मैं तो अकेले आ जाऊंगा. चलो let us go with the next two forests then I'm going to explain when we move away from desert decid yes look at the word is saying desert so normally the rainfall is below 50 centimeters normal trees are not found only shrubs you know what are shrubs so the young one of trees there we have done where evergreen they are growing tall whereas in desert area like Rajasthan it is unable to grow scarcity of water सर राजस्थान में animals होता है only western part is desert अरे they grow पानी होता है वहाँ पे. sugar cane and rice भी grow होता है मैं जब गया था floods भी आया था जिस जगह होटल पे मैं रुका हुआ था so we always believe that desert has its own unique what is unique we will be studying something called as xerophytic plants any idea what is xerophytic हाँ. in biology you might have studied Yes. what is it पानी कम. cacti, thorny bushes, spines, and so on. Somebody asked me, sir, due to all this reason, why these desert forests are important? It has its own habitat, mainly animals which are burrowing type. You know what are burrowing? Living inside the soil. Move away from this. ये बहुत जरूरी है. This I'll show you the videos also. We call a special variety of tree, which is called as mangroves, are grown here. The word is tidal. Normally, these forests are influence of what? ये सब समझ लो यार मैं तीनों एक साथ कर रहा हूँ फिर तीनों बात नहीं करने का बोल रहा हूँ listen
So these have this stilted roots, the trees. Here. What is stilted means? You can see these roots when it is a low tide. What is low tide? Sabkumar. In fact, that area right from that Moraj Palm Beach till that Sole Depot in Nehru, yes, small tiny leaves. These are all mangroves only, and they are the natural force which can obstruct the floods. The tsunami of 2004, if it could have been mangroves, the effect on Indian areas where tsunami could have been minimized. So that is the importance of mangroves. The Navi Mumbai airport, which soon to be launched around Verna, it is mangroves wherein acres and acres. Ultimately, it has been all destroyed. So we have to really say, you save mangroves, mangroves will save the environment. This one, the word is either mountain aega, or in exam they'll ask you mountain. There are 3 levels or 3 altitudes you have to study, and all the 3 altitudes will have a different tree types. What are they? We'll say 1000 to 1500. I'm not very sure, but yehi hai. Okay, what is it? MTS. What is MTS? Meters above sea level. Then 1500 to one more level, 2500 or 3000, and it is above 3000. So ye aake will match like evergreen and deciduous. You understand? Yes. Whereas this will be more like conical forest. What is coniferous forest? That needles like that will be here. This will be more like small leaves, and this will be exactly like that coniferous. You know why coniferous? So since they are at a very tall level, if it is snowfall any, it has to protect. So all the 3 forests occupied very important, which I feel this is important since India is a coastal, and all 3 sides covered with water. इसका मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा slowly and steadily. Government of India is giving more importance to the replanting of this plants, क्योंकि ये एक ही प्लांट है जो उस मार्शी एरिया में saline water में grow होता है. Fishes के लिए important है, aquatic plants के लिए important, all that small germs come in that. And it maintains lots and lots of ecological balance. When we talk about this desert forest, it creates a separate identity. What is separate identity? If you have gone to any time Rajasthan Jaisalmer, the festival, it starts in the month of December and goes till the March. It shows NRIs coming to many. So that तो वो festival नहीं है, but desert has its own importance. Like the biggest desert is Thar Desert. Correct? They say although it is a very sturdy region where water is less, but people are well adapted. Animals also well adapted. Okay, shall we? Animals like The camels are there. This burrowing animals, rabbits, mice, some poisonous snakes. But animal life is very restricted. But at the same time, they are unique there. Shall we proceed? Yeah. So we are reading, we are marking, and then I'll show some videos. That will perfectly end up your 215 minutes. Okay, so we'll give him the reading. Good reading going on. Desert forest. Come on. Tropical desert. Keep your pencils ready. tropical desert forests. These are also known as tropical thorn forests. Climatic conditions. Underline the word thorn. Why thorn? Because of the vegetation type. Carry on. Climatic conditions. These forests are found in the areas which receive rainfall less than 50 centimeters, and the mean annual temperature ranges between 25 degrees Celsius to 27 degrees. Put all this in the bracket. As humidity below 47%. Is humidity very important here also? Yes, it is. Go on. Distribution. These forests are chiefly distributed in southwestern Punjab, Haryana. Wait. Read mat kar. Any 2 or 3 places mark. That's enough. I will say this. Characteristic features. Okay. These forests have xerophytic vegetation due to paucity of rainfall. What is the other word for paucity? The nice you got it in English. Bolo.
उधर लिखो scarcity. Yeah, Yes. you writing. No, I was reading. Don't tell me it is already written. No, it is not written. I was reading. Right, my dear. Due to scarcity of rainfall, the trees are stunted with large patches of coarse grasses. These forests have been Large patches of courses of grass. studded with large patches of coarse grass. You have to connect the words in such a way it makes a lovely meaning. Okay, thank you. Go ahead. These forests have trees which have adapted themselves to survive in drought-like conditions. Underline the word drought-like conditions. So why not they are saying it is drought? Is it drought only? No, little bit water. So that was it. And you know what is a drought? Yes, What is a drought? lack of water. Drought मतलब The rain. नहीं, lack of Don't say. Yeah, food, what is lack of drought? food. And Water. और कुछ और जब बारिश नहीं होती तो जमीन से तो वैसे तो अभी थोड़े टाइम पहले हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा। lack of water. Lack of humidity. Lack of water. आप लोगों ने बंगाल से मैंने सुना हाँ, was it due to drought? ड्रॉट होता क्या है पहले वो बताओ। मैं भूल गया हूँ। You know what are floods? Yeah. Just opposite of floods. No water. लाइक ऑफ मतलब for months there is no rain. Maybe for a year or so there is drinking water coming to an end. हाँ, ये इसमें बड़ा था। ये मैंने वो है ना अफ्रीका का कौन सा country? They pull the roots of the plants and try to twist some part of the roots of the plant and get 2 or 3 little drops of water. They survive. अरे वो मेरा mom कहता था this story and Africa का straight fire. How they are living without the water for ages. And वो fruits बेचारा पूरा जमीन के अंदर से लेके जाता है आदिवासी community to be very fun. But they are very happily living. अगर हम टैप खोलना तो जरूरी है ये मेरे घर में होता है पर बंद नहीं करें अगर मैं जाके बोला ना ये लेक्चर नहीं है और हाँ धन्यवाद so you see in Maharashtra only I don't know whether you know the places are called Marathwada and Vidarbha region where absolute dryness है ना forget about farming or agriculture they do not have the water to drink and then come to our area है ना how Jamajand is So rain much चलो read on they are called as xerophytic plants. zero fighting है zero fighting Xerophytic. For example, the acacia or Acacia एशिया का वहाँ पे क्या एशिया हैं acacia the acacia or the bamboo trees have developed long tap roots that can underline the word tap roots there are two kinds of root one is fibrous other is tap so seed अंदर जाता है carry on that can reach deep groundwater resources and therefore can survive drought-like conditions. Further, the acacia हाँ ठीक है जो भी आगे सासू माँ का नाम have long thorns and a symbiotic relationship with the staining ants. what is that word symbiotic in perfect relation with that ants क्या वो ant eater देखा आप लोग ने क्या देखा Red ants. हाँ जहाँ red ant है वो animal रहता है and you know what are termites Yes, that white sugar. और हमारा फर्नीचर के ऊपर खा जाता है पूरा एंड टर्माइट्स भी दिखने में बहुत गंदा है दे आर द मोस्ट नोटोरियस वो उसके जैसे ही दिखते हैं पर वो छोटा होता है white. हां टर्माइट्स अलग रहता है और एंट अलग रहता है रेड एंट्स आर यू नो सो डेंजरस Ants नहीं वो ant eater और वो termites दोनों सेम दिखते हैं. ये जो बेबी इज लाइंग ऑन द क्रेडल एंड ये जो है ना वो क्या बोलते हैं रेड एंट्स अटैक करते तो लैक्स एंड लैक्स खाता है एक साथ ऐसा वेव्स के तरह so if they are forgetting the baby and ran away after 2 hours they come and see baby was not found only the bones were there utna fast खाता है red ants are the most deadliest ants in the world and only America north या south पता नहीं but America में मिलता है if they attack people have to leave their belongings and get out as early as possible because एक तो deadliest है दूसरा
वो ऐसा कॉलोनीज में आता है। We can kill them, no? क्या Dead है? ants इतनी सी अरे तो इतने ants से मारेगा सब बहुत है. फिर ये lakhs and lakhs में क्या बोलो? Lakhs? हाँ, अरे बाबा, you can see only that floating light coming. In fact, एक पापाई करके कार्टून है. पापाई. Papaya fruit. हाँ, fruit. लेके गया एक बार लेके He is the person who has comedily shown that. मतलब उसने बताया कि जब जब घर बनाता है ये आटा के खा के चले जाता है. सेकंड टाइम बनाता है वो जब फिर भी होता है. लास्ट टाइम वो क्या करता है वो पूरा आयरन का बनाता है. एंड वो उनका जो टीथ जैसा जो है ना इट इज वेरी शार्प. Except is that flute that he kept in his mouth, it eats everything. And देखो, whenever you go to a desert like Rajasthan or Thar desert only, you will feel entire ecosystem is new. What is ecosystem? Your food habits, your construction of the house, your dress habits, even your eating habits change. Why? The climate is one factor which will kill you. I hope so. चल जल्दी कर. When my next two lectures gets cancelled, I have to quickly on to have a nice week. Therefore, conserve drought-like conditions. Further, the acacia trees have long Acacia नहीं यार, acacia. Acacia. बार acacia. Further, the acacia trees have long thorns and a symbiotic relationship with stinger ants. Okay. These ants live in the thorns, feed on the nectar produced by the trees, and when an animal takes a bite of the leaf, the ants attack on the animal. In this forest, plants remain leafless for most part of the year and look like scrub vegetation. The important trees found here include bubble or acacia. Hey, this bubble आ रहा है. Anybody knows what is this bubble tree? It is used for toothbrush. Yes. Toothpick. Toothbrush नहीं, my dear. But toothpaste. A toothpaste. Toothbrush तो I was Dabur. Dabur अलग है, bubble अलग है. Bubble or acacia, they palm, bear, hair. Yeah, bear care. Yes, care. It is board that Marathi. Board. Bear care. Care. You stop the reading. You stop the reading. You start reading. This is No, relax. economical value. Tropical evergreen forests produce various plant species of high economic value. The timber produced is hard, durable, and fine grained. However, due to tangled mass of trees, tangled. He is reading tropical desert forest. हाँ तो वही कर रही हूँ. ये कर रहा है तो. Yeah. तो desert forest पढ़ रहा है कौन सा पढ़ रहा है? Tell her the page and Tropical desert forest, page 110. Okay. Quran book. मेरा क्या जा रहा है? Look. बंद कर दो. इतना ठंडा हो गया. Yeah, but it comes to me. You guys are far behind us. मैंने स्विंग बंद किया है. हमें बहुत ठंडी लगती है स्विंग. Swing. No more. We have less time. Yes. Your fish is eaten raw or made into pickles or grated. Pickles. Yeah. Its timber is hard, strong, tough, and durable. It is used to make legs of bedsteads. क्या होता है sir? Bestie. Bedstead. Bestie. Besties. Spelling क्या बोलो. होता है? BEDSTEADS. Bedsteads रहेगा. क्या पता sir? Food, agriculture, implements, Correct है. Carry on. bubble, etc. Bubble bar and gum have met. सर यहाँ पे ऐसा वो लिख किया है. क्या लिखा है? Slide. नहीं slash नहीं क्या Oblique, वो oblique. इंक है. हाँ सर ठीक है. आगे आगे. बुक का नहीं मेरी सीनियर का बुक है तो Okay. पढ़ो. Same book है. Date palm is beaten raw and also used as an astringent. क्या होता है? Astringent. क्या होता है ये? नहीं पता. Stringent. हाँ बहुत कड़क रोप जैसा कुछ बनाता है वो. हाँ. Syrup or paste of
sore throat, cold, fever, etc. It's a medicinal plant. Very good. Neem Okay. bark and roots have medicinal properties. Neem oil, leaves, and extracts are used to manufacture health and beauty products. It's also used as an insecticide. चलो बोल. You start reading. खत्म ना हो. पूरा एक टॉपिक दे रहे हो। अरे तो क्या हुआ? हाँ. क्या हुआ तो? I don't know. इसमें क्या है? Hey, look here. When we are moving this to this is a dry desert condition. This is marsh and swampy. Sorry. Wait. First we'll see the video. No need. I'm not showing that. Why? Hey, Because you are misbehaving. No, you promised us. When was that word? I never use the word promise. You only insult some You word. said my words, right? No. A man's word is No. promise. It's a woman's word is a information. No, a human's word. Hey, look here. Let's see. Guys, enough now. I didn't do serious. I'm looking at the window. You should be basic. You can be. Look at this. These are the roofs. Even in Jala. They can be the salty water. That's nice. Yeah. They are destroying these forests. They are replanting it, huh? This is Malayalam. The right hand side you see, that is Malayalam. It looks same as what Tamil. Or somebody told me jalebi ka piece. Okay. Now write about the mangroves in your notebook. I'm giving notes. Because एकदम आवश्यक है बैठ के गरम करके जाने का right out. We can go slow. No, I have to finish this. खत्म हो जाएगा दो ही पेज है Write down mangroves in your notebook. They're not mangroves. What is that? Littoral or tidal forest. Give me that word. Hey guys, then rain is not doing this job. So make your mother to make some hot. Yes, yes. I hope so she will, otherwise I have to leave from outside. One of these specialized. Continue. No, this is the heading, my dear. Water and literal. One of these specialized. Natural vegetation.
mainly found in specialized natural vegetation, mainly found in wetlands and marshy regions of the country. Wetlands and marshy regions of the country. Full stop. It is the second point. Huh? It is well adapted to. It is well adapted to. हमें एक ही जगह पर मैंग्रोव्स लिखेंगे. Well adapted to saline, marshy, means definitely बंद हुआ है. Saline, marshy, tracts, 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 providing the best suitable ecosystem for the aquatic species. Then the last point, it is one of the most important natural protector against floods. Okay, completely. Protected of. Against floods, not of floods, against. Now you can come back to your textbook. Okay. Only mark climatic condition and distribution. Features to my level. It's too good and too important. But conservation है वो तो कर लेंगे. थोड़ा सा social and agroforestry नहीं है. सिलेबस में नहीं है. देखेंगे सिलेबस में आगे. नहीं है. तो नहीं पढ़ेंगे. वो तो तुम लोग पिछले 2 साल से यही खेलने लगे थे. अपने आप को कुछ सीख लीजिए. तुमने ही किया है. 9th में एक चैप्टर इस बच्चे का था तो दोनों बच्चा बाहर गया. Very bad. हाँ. ये हमारा भी था इसलिए हमें हाँ तो करते हैं जनरल नॉलेज के लिए. क्यों हमें नहीं करना? एक मिनट. Now we are in 10th. Forget about that. आगे इसको. और हम जल्दी गए. फिर उसका नेक्स्ट दिन इसको कभी तो मैंने जल्दी भेजा. हाँ इसको जल्दी भेजा था. पूरा एक लेक्चर जल्दी ये नहीं बोलेगा. जल्दी भेजा. हाँ जल्दी भेजा. मुकरा है. अच्छा मत है. चल. हमें Show some big heart. Show some big heart, man. अबे वो यही है. जल्दी लिखो climatic climatic condition जल्दी लिखो. देख जल्दी लाइव में. हाँ ठीक है. मतलब आज इन दोनों को बिठा देते हैं जल्दी, है ना? हाँ मैंने पिछले लेक्चर में आया था मैंने लिखा था पूरा सॉल्व. हाँ ठीक है. यार एक सिर्फ है सेकंड. तो रोना. आज छोटे बात नहीं चलता. रोल लिखना है climatic conditions. सब नहीं लिखेंगे पॉइंटर्स में. Only points में लिखो. कहाँ पर है? अरे टेक्स्ट बुक में है. यहाँ नॉट मोर देन 200. हाँ. हाथ से आवाज नहीं आता. अभी आवाज कम हो गया. Indian is a sequence you also ना. Yes, but we maintain discipline. लोग का बात है वो पूरा. Sure. आप नहीं सिखाते हो. अभी हमारा लेक्चर हमने स्टार्ट किया. क्या? ज्योग्राफी का? आपसे हाँ ICSE का हो गया but not all are there for my subjects ना. हाँ. साइंस के. सबको काउंट करके ऐसा ऐसा छापड़. बहुत लोग हैं. इस साल 9 बहुत लोग हैं ICSE. पिछले साल जो हुआ और बात आज पिछले के पिछले हमारे उनके पहले भाई क्या है वो विंडो हो ओपन गया करके क्लाइमेट कंडीशन क्या सब लिखना है. अभी तो अंदर बैठा है बाहर जाएगा तो मजा आएगा. सर हो गया क्लाइमेट कंडीशन. अरे सब लिखना है. डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं हाँ क्लाइमेट और डिस्ट्रीब्यूशन लिखना
And distribution लिखा है ओडिशा and आंध्र प्रदेश. Features थे. Available features. I'm giving. बोलो sir. Hey, give me that textbook. Yes. देखो मैंने वहाँ पे मेरे कैलीग्राफी भी ली है. Point number 1 for characteristics. Now you write. Point number 1. Wait up. Mainly evergreen species. Point number 1. Features. Mainly evergreen species. Next. Trees of varying density. अलग-अलग type है. Variation. Comma. Height. With special adaptation to wetlands. Wetlands. Next. Tree trunks. Careful with the word. Are found submerged in the water. Specially adapted. Next. Specially adapted to marshy tracts. Next. The roots of these plants are called breathing roots. If you want to take the line. Maybe, that's right. Bracket में लिखो pneumatophores. Next. Important tree types. Amur, Bhara और Bhara. Rhizophora, ये सब पूरा biological नाम है ना? Canes and palms. Canes and palms. ये सबसे important है. Sundari trees. Etc. Mountain. हाँ एक काम करो, ये भी लिख लो, ये बहुत शॉर्ट है, आता है एग्जाम में कोई नहीं आता. As the name suggests, देखो, it looks. Mountain. As the name suggests, mainly found at higher altitude. At higher altitude. At higher altitude. Flowers first only. Next. Climatic condition. Short word लिखो. Annual rainfall 12 to 13 degrees Celsius. Annual rainfall 12 to 13 degree. Next point लिखना. Centimeter. I'm so sorry. Then temperature. Then rainfall 100 to 300.
Humidity is at 56 to 65%. 56 to 65%. और temperature का 26 to 29 degree. नहीं 12 to 13 degree Celsius है temperature. Mountain forest है ना ये? What are you looking? Tidal forest. हम लोग ने finish करके आगे चलेंगे यार. अच्छा. Distribution लिखो. Found along. हाँ बस. Found along Peninsula region, Vindhyas, Satpuras, Satpuras, Nilgiris and Western Ghats. Nilgiris and Western Ghats. Right features. With varying altitudes, different tree types are found. With varying altitudes, different tree types are found. Next one. Foothills of Himalayas. Next one. Foothills of Himalayas. Right. Deciduous forest. Next point. Moist temperate forest. Moist temperate forest. Put icon 1000 to 2000 MTS. Or MSL will exist. 2000. So this function will remember. Yes. First day of the tough time to PhD. अब इधर पूरा गटर भर गया रहेगा वो मोटर लगा के वो लोग अंधेरी सिरोने में बढ़ता है क्या सिरोने में किधर अच्छा वो मंदिर या मजा आ गया वो देखिए चढ़ना है ना तो दूसरा कोई रूट नहीं बना राजीव गांधी सर हाँ तो आज मैं तुझे फिर बाइक से छोड़ दूँ बट मेरा अभी पिक्चर है कैंसिल हो जाएगा सर पॉजिटिव बस कैंसिल होने का नेगेटिव हो गया वेरी गुड नाइस राइट नेक्स्ट पॉइंट है between 1500 to giving all pictures to the looks and 1750 I'm not catching the looks now 1750 coniferous trees and top. But what does difference make with our studies? You guys are getting this stuff. Will you देखना आप डिक्टेट करें तो उसका भी आवाज आएगा हम सुन नहीं पाएंगे हम ये पहले बात सुन सकते हैं हाँ ब्लर हो रहा है coniferous trees like chip pine CHIR PINE तो चल के जाऊंगा चलते पागल है and blue pine and spruce अभी ये सब आपको बीच में वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा वो बाहर से आ रहा है जो हमारे हाथ में नहीं है वो हाँ वो यहाँ से समझ में आता है सर हो गया ना अभी
वो रह गया वो रह गया हाँ सर अक्षय अक्षय कैलाश कैलाश अक्षर Blue Pine and Golika and the हाँ लिखा है ना Golika bracket में 22502 3000 meters. कितना बड़ा Blue Pine and क्या करना है ये सब कंफ्यूज होगा करके मैं दे रहा हूँ सिंपल लाइंस में. Instead of thanking me, you are trying. चलो So, right, that's it. हो गया ना In peninsular regions, oh man, at a height of 1500 meter, tropical to temperate forest. रोजा भी ये नहीं दिखाना नहीं जाएगा. दिखाया मेरे को समझे नहीं आपने हाइट ऑफ 1500. रिपीट सर करिए वापस बोलो नहीं बोलो. इन आप पेनिनसुलर लोग करिए कि फिर हम लोग क्या भी आएगा. हाँ 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 at the height of 1000 to 500 1500 उसको ब्रेक करके बोलो. हाइट ऑफ Tropical. हो गया अरे रुक तो सही क्या हाइट हुआ. ऑफ height of 1500 meters. Temperate to temperate forests are found. टेम्परेट फॉरेस्ट हाँ जो भी है found. एक काम करो फिर क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए फिर पैकअप कर लो. हाँ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सर हम दोनों के टेक्स्ट बुक ये इन दोनों की अलग है. Explain the meaning and ways of forest conservation. Ways of forest conservation. मीनिंग आके पेज नंबर दोनों सेम ही है 113 आ जाएगा में. सर वो एक ही अगर क्वेश्चन नहीं आया तो बगा देना मुझको. एक ही क्वेश्चन है ना और भी है सोशल एंड एग्रो नहीं है. चलो क्वेश्चन थैंक यू सर. I will not say anything. Use range from the cannot. You have to be inside. 250 को तो निकालना ही पड़ेगा. Range को तो छोड़. चलते जाओ. फिर You want to see any videos of our topics? नो समथिंग आउट ऑफ टॉपिक What is it? कैलाश चंद्र Secrets of Kailash. Why? I used to see this on things when I was a junior. Now also you have to It's standard for Where my you have to class. see it. अभी It is not called time pass. And now we are going to have a straight route from India. पहले चाइना ने तो नेपाल से उतर गया. India to डायरेक्ट टू कैलाश पर तो अभी बन रहा है बट आई डोंट नो गडकरी साहब कब बना but कुछ फायदा तो है नहीं ऊपर तो जा सकते नहीं है. क्यों नहीं जाता वो 10 सेकंड. कौन ऊपर गया है और अरे वो तो ना आ गया सर ऐसा क्यों होता है आपको क्या लग रहा है माउंट एवरेस्ट से कम देगा भी है. नहीं It is not एनजीसी व्हाट एनजीसी battle national geography.
Why did the Chinese government ban? Because they had tried with their jets, they had tried with the most powerful choppers, all made with the natural. And Chinese took this from us. Okay, actually उनका टिबेट एरिया में पड़ता है ना. But then till now, whoever have gone, only one local monk has gone. When he has come back, he lived for a few years, then he died. But he was very silent till his death. He did not utter a word. Because they say the nails, the heads, and they say time travel शायद possible है. One of the Irish fellow, I think Irish, he was only 37 when he went there. By the time he came in, his physical appearance was as good as he was 60. But they should not have been banned at least. Banned, मतलब, and it is not safe now. What is there, we are unable to know. I think एक Bermuda Triangle का हमको मालूम है. पर इधर तो कुछ भी हो भी नहीं मालूम है. What if you shut down like now? Shutdown क्या impossible है यार. जब chopper से तुझे allow नहीं कर रहे हैं उधर land करने के लिए. चौपर से नहीं कुछ नहीं, मतलब तब land करेगा तो ना तू study कर पाएगा. फिर क्यों plan कर रहा है जब chopper ही तुझे allow नहीं हो रहा है. You know the one military general from India, Bipin Rawat, died in Tamil Nadu only. They said it is China which hacked the avionics of what do you call it? The chopper. Avionics का मतलब समझता है क्या? मतलब जो radar है या जो भी है, उसने hack कर लिया है. And that was flying over a very desert area, not desert, jungle area. तो उनको जब that chopper is considered MI6 soldiers, American और German दुनिया का सबसे बेस्ट चॉपर था, डबल इंजन. ये जाके क्रैश कैसे हुआ? Many people say might be some. नहीं सर क्या सकते हैं बारिश से बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाए. मेरे को तो चलते जाना है सर, ये तो और पूरी बढ़ गई थी मैं तो. आगे तो गए. अरे आप नहीं, I will be the first person to say this. अच्छा ये बताओ मुझे फर्स्ट क्लाइमेट के बाद कौन सा टेस्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ है. क्लाइमेट भी नहीं हुआ. क्लाइमेट भी नहीं हुआ. क्लाइमेट भी कहाँ पे हुआ है? हम सो रहे हैं. यहाँ पर साइंस अभी का भी ये ICSE हॉल में अभिषेक का हुआ ना. अभी ये भी साइंस के 3 लगा रहे हैं, मैथ्स के भी लगा रहे हैं. मैथ्स के 3 हो गए. साइंस को बोल सकते हैं कुछ भी कैसे देंगे सर, हम तो लेते ही नहीं, हम तभी देंगे. इंग्लिश के 3 दे रहे हैं, साइंस के 3 दे रहे हैं. उसमें डबल इंजीनियर मार्क्स आ हिस्ट्री गया. का दिया क्या? हाँ ठीक है कल ही थी. इसके कल नहीं पिछले भी बस इसी का. तो 9 into 7 चैप्टर ना, तो फिर और 2-3 होगा तो फिर मैं पूछने भी नहीं करूँगा और क्या. 10 चैप्टर्स के हैं ना. 10 चैप्टर्स की. नहीं 7-8 हुए ऐसे बोल रहा था मैं. हाँ तो एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट में फिनिश किया क्या? 4 एक ही बाकी है, फर्स्ट पार्ट है. फोर्थ पार्ट भी हो गया. तो हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया. अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का